Good morning, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the morning session. We will have Madhur sir with us today for the morning session. And yeah, जैसे कि हमें पता है आज हमारा निफ्टी एक्सपायरी भी होगा, राइट गाइज? एंड मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट इज नेगेटिव. निफ्टी का अगर हम बात ही करें तो इट्स लाइक 66 पॉइंट डाउन साइड. एंड आगे इसी पे और बात करने के लिए वी हैव मधुर सर एंड ही विल गिव अ वेरी ब्रीफ इनसाइट अबाउट इट. So Madhur sir, let me know if I'm audible to you. Yes, Avinash, you are audible. Madhur sir, let me know when we are good to go. Yes, in a couple of minutes we will start. So guys, technical pick की बात करें, so we have suggested like UPL for the technical picks. Target उसका रहेगा 680 का. So you can definitely look out for these stocks. Meanwhile, Madhur sir join us and share the insights about the market, right? So you can definitely focus on UPL and others के अलावा अगर हम दूसरे indices की बात करें, Bank Nifty is like 280 points downside, nearly 0.5 or downside, 0.6% downside, sorry. सो मार्केट में अगर आप देखने जाओगे तो यही स्टांस रहा है. कुछ इनिशियली इट shows the negative stance and later on it covers and it's nearly flattish to positive. तो यही रहा है. So please trade accordingly. Please make sure your position size will be limited क्योंकि volatility भी देखने मिल सकता है आपको. So Madhur sir ne already have shared his screen. Madhur sir, it will be really appreciated if yeah, great. So we are good to go. Madhur sir, over to you then. Yes, yes. So very good morning, everyone. Welcome back to the morning session. Right. So once again, we started with the negative side and made a low around 22,810 level. So from last so many session or last 3 to 4 weeks, we are discussing the level 22,800. Yeah, 22,750 to 22,800. Right from last 3 to 4 time, index took the support near the same and get the bounce of 200 point, 400 point, 500 point from that level. Even you can see your today's low is around 22,810. When yesterday's low is around same level, right? On last Monday, it was made a low around 22,725. So basically, a range में support ले रहा है index that is from 22,730 to 22,800. 3 से 4 बार वहां पे सपोर्ट लिया और वहां से परमानेंट बाउंस देखने मिला है. till Nifty on a closing basis hold about 22,800, it's a good for us. But once the Nifty closes below 22,800 on a daily basis, it will create a more panic towards 22,500 level, right? So on an immediate basis, Nifty support is seen at 22,750, while the hurdles are placed at 23,000. Once the Nifty able to hold about 23,000, Nifty can go towards 23,200 and then 23,333 level. But the problem is Nifty is not able to hold on upper levels. Look at yesterday's candle. It made a high around 2350, and from there onwards, again the fall of 100 point from the same level. So Nifty is not able to hold on upper level as well, though the support based buying is clearly intact. So index is witnessing both side movement. सपोर्ट से बाइंग भी देखने मिल रही है, बट द प्रॉब्लम इज कि सजेशन से सेलिंग भी देखने मिल रही है. तो एक कामकाज जो है निफ्टी का एक रेंज में हो रहा है, राइट? सो निफ्टी एज आई सेड 22,750 is an immediate support, while the upside 23,000 is an immediate hurdle. Now talking about the bank nifty, yesterday we are seeing some good momentum in the bank nifty, and all the because of the private banks are doing very nice. You can see HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, even the Kotak Bank. काफी अच्छा उसमें चार्ट स्ट्रक्चर है. उन सब की वजह से बैंक निफ्टी कल ऑलमोस्ट नियरली 1% अप था. सो बैंक निफ्टी इमीडिएट सपोर्ट इज 49,000, then 48,750 level.
while the immediate hurdle at 49,500 and then 50,000. Once the Bank Nifty able to hold above 50,000, you can see the momentum in the Bank Nifty towards 52,000, 52,500. But we need a decision closing above 50,000 for that. The Bank Nifty 49,000 is the immediate support, immediate hurdle is a 49,500, right? So stock specific action is also there. So as I said, let's look at the index specific, sector specific movement, Nifty Private Bank. This is a chart of Nifty Private Bank. It's on the verge of the breakout of head and shoulder. Right, यहाँ पे एक left shoulder है, this is the head, and this is the right shoulder. So private bank index is on the verge of the breakout of head and shoulder pattern. Right, you can keep on eye HDFC Bank, ICICI Bank. थोड़ा सा HDFC Bank में आज थोड़ा सा पेन देखने मिला, but overall जो structure है compared to Nifty and other stocks, private banks ने outperform किया है सब. Right. Even after a long time, yesterday we have seen a good momentum in the Nifty small cap index and the Nifty mid cap index. Almost after 2-3 weeks, we've seen some buying in the mid cap and the small cap stocks because we know everyone holding the mid cap, small cap stocks in their portfolio. But yesterday, seen some buying in the mid cap and the small cap stocks. Good fundamental companies, जिसमें बहुत ऊपर से करेक्शन देखने मिला है, आप उसे अभी भी बाय कर सकते हो. Right. So let's talk about some intraday stocks now. Sonacom हमें अच्छा लग रहा है, forming a higher bottom from the last 4 session and Tesla इंडिया में आ रहा है, Tesla का टाइप होने वाला है Sonacom के साथ. So it's a positive sign for the chart stock as well. So one can buy Sonacom at the CMP, right? 513 के 14 के आसपास ट्रेड हो रहा है. यहाँ पे 506 506 का स्टॉप लॉस है. रुपए में लग रहा है कि 10 से 12 पॉइंट का स्विंग इसमें आना चाहिए. 525 के आसपास, 527 के आसपास इसमें मोमेंटम आना चाहिए. So one can buy Sonacom. So guys, we have initiated an intraday trade on Sona BLV, right? Currently trading near 514.35 levels. अब current market price पे buy करना है with a stop loss of 506 and the target for the upside will be 525. Right, Madhur sir? Yes. Great. One more stock, Avinash. Today we have seen some good momentum in the capital market theme. After a long time, after almost 2-3 weeks, seen some buying from the lower levels in the capital market theme. So CDSL भी काफी अच्छा लग रहा है हमें. Stock is up by nearly 2% and एक शायद 3-4 दिन का जो रेंज था उसको ब्रेकआउट भी देखने मिला है. So one can buy CDSL at the current market price with a stop loss of 1215 for the upside target of 1270. CDSL है, BSC है, KFin Tech है. After a long time, we have seen some good buying interest, a good volume as well in the capital market theme. So guys, we have initiated another intraday trade on CDSL, right? So currently trading near 1235 with a stop loss of 1215. The target for the upside will be 1270. Yes. So as I said, we have seen some good buying into the mid cap and small cap. So look at the mid cap chart. Today is up by 0.32% to the good action seen in the stock specific. Yesterday it was up by 1.2%. So from last 3 to 4 session, on 17th Feb, it made a low of around 10,840, and we have seen some good momentum of more than 500 point in the index. Same with the small cap as well, right? So yes, Avinash, now we can continue with the queries. So Madhu sir, before we move ahead with the query, जैसे कि हमें पता है we have our Nifty expiry today, right? So do we have any trade considering market is trading
फ्लैटिश टू नेगेटिव, नॉट इवन फ्लैटिश, लाइक 50 पॉइंट्स डाउनसाइड। तो निफ्टी में कुछ स्ट्रैटेजी या कोई नेकेड ट्रेड बन रहा है राइट नाउ, और डू वी हैव एनी स्ट्राइक्स दैट वी कैन कीप आवर आई ऑन? See, naked तो हम suggest नहीं करेंगे, but looking at the index volatility from last 2 to 3 trading session, it was very difficult to trade the option. Then yesterday's movement was quite volatile in the index, and option के कोई भी premium ऊपर के लोग sustain नहीं हो रहे हैं. So it is a put or call. So better go with the strategy, right? किसी को bull call अगर यहाँ से लग रहा है कि आपको हो सकता है, bull call initiate कर सकते हो. But as of now हमारा जो view है slightly positive रहेगा, because index is able to hold 22,800. अगर 22,800 के नीचे आता है, then we'll change our stance to the negative side. But as of now the stance है हमारा slightly positive है. So one can go with the bull call spread. अगर मैं strike बताना चाहता हूँ तो one can go with the 22,900 कॉल आप बाय कर सकते हो, एट द सेम टाइम 22,950 कॉल आप सेल कर सकते हो. सो अप्रॉक्स 17-18 पॉइंट का कॉस्टिंग है इसका, मैक्स प्रॉफिट विद 30 पॉइंट्स. तो एक ये स्ट्रेटेजी आप इनिशिएट कर सकते हो, राइट, विद अ स्लाइटली पॉजिटिव बायस. वन कैन इनिशिएट बुल कॉल स्प्रेड, बाय 22,900 कॉल एंड सेल 22,950 कॉल. 1820 के कॉस्टिंग में बैठ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट विद 30 पॉइंट, 32 points. So what will be the stop loss for this trade, Madhu sir? As I said, 20 points. 20 Right. points is the max loss. So I'm really sorry, Madhu sir. Could you please repeat once again the trade? So buy 22,900 call and sell 22,950 call. Okay. Because Nifty is able to holding 22,800 level. Once the Nifty break that, so वहाँ पे थोड़ा pain देखने मिलता है, but till it holds, the bias is slightly positive. Though Nifty is trading slightly negative as of now, but still we are going the slightly positive bias. Great. So guys, हमने trade initiate किया है, right? Pinned it as well. Buy Nifty 22,900 call and sell Nifty 22,950 call. Combined premium for both of this call will be 30 to 32 points, and the maximum loss will be 20 points from here, and the maximum profit will be around 30 points, right, Madhu sir? Yes. So guys, we have pinned it as well. So yes, let's take a couple of stock queries. Um, what is your view on NMDC? So we have seen some good action in the Nifty metal, and even look at the chart of NMDC, quite a good recovery from the lower levels, from low middle around 60 and now trading at a 65, forming a hat of higher bottom on a daily structure. It's a weekly chart as well. Weekly में अब तक negation नहीं हुआ है, तो 3-4 वीक से कंसोलिडेशन मूव में है वीकली में. So once the stock is surpassed about 67 level, यहाँ पे एक अच्छा बाय बन सकता है. So keep 67, 68 एज अ रेजिस्टेंस. वहां पे अगर सरपास होता है स्टॉक, तो वहां पे ऊपर में हमें स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 70 लेवल. What is your view on Reliance? So Reliance is trading its very crucial support zone, right? Today is up by slightly up by 0.31%, and the support zone is around 1190. So as of now इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है रिलायंस में, राइट. 3-4 दिन से हाइट ऑफ हायर बटन बना रहा है, बट कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा है.
सो सपोर्ट के आसपास आता है, सो 1200 सॉरी 1190 द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर द रिलायंस, वहां पे आप बाय कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अदरवाइज सीएमपी पे तो हम सलाह नहीं करेंगे बाय करने के लिए। Maruti Feb, Maruti Feb bought at 1300 call bought at what price? Don't know. So look at the structure of Maruti, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हुआ है, राइट। यहाँ पे एक बाइक देखने मिला था ऑन 1817 पे, बट ऊपर में सस्टेन नहीं हुआ है। टुडे स्टॉक अप बाय मोर देन 2%, राइट। सो 30,000 आपने कॉल बाय किया तो यहाँ से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट दूर है आपका। सो उसको इन द मनी आने के लिए मारुति को कम से कम यहाँ से 600-700 पॉइंट चलना पड़ेगा, तब वो इन द मनी आएगा आपका कॉल, राइट। सो कीप द 12,270 इज अ सपोर्ट जोन। अगर 12,270 एक ब्रेकर होता है नीचे के लेवल में तो बेटर है आप कॉल एग्जिट करते हैं। Sir, what is your view on Ashok Leyland for today or Feb expiry? सो अशोक लेलैंड की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है। 3-4 डेज बैक इसका रिजल्ट भी आया था और रिजल्ट काफी अच्छा आया है। उस दिन स्टॉक ऑलमोस्ट अप बाय 4.5% और also is up by 1.4%। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ है फ्रॉम नेगेटिव टू स्लाइटली पॉजिटिव बायस। इफ स्टॉक यहाँ पे 230 का लेवल निकलता है तो ऊपर में स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 240-245 लेवल। सो यहाँ से 4-5 रुपए का मोमेंटम होने दीजिए। स्टॉक इफ इट एबल टू होल्ड अबाउट 230 लेवल तो वहां पर आप बाय कर सकते हो। Maruti, I guess Anilji, we have covered it, but still, specify जैसा आपने किया है आपके ट्रेड को. So Anilji had bought Maruti Feb futures of 1300 call 3 lots at 72.86. Hold or exit. Right now he is making 9k loss. सो एज आई सेड, अगर फेब एक्सपायरी का है तो ऑलमोस्ट 30,000 का कॉल तो जीरो होने में रहेगा, बिकॉज यहाँ से 600 पॉइंट दूर है एंड एक्सपायरी जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आई गेस जस्ट 1 वीक, नेक्स्ट थर्सडे हमारा एक्सपायर रहेगा। तो बेटर है आप इसे एग्जिट कर दे कॉल को। अगर फ्यूचर आपको होल्ड करना है तो मैं अगर स्पॉट की बात करूं तो 12,270 जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट जोन है, वहां तक शायद नीचे आ सकता है। अगर 12,270 ब्रेक होता है तो आप फ्यूचर भी एग्जिट करना चाहिए। Sir, what is your view on Kotak Bank? So view on the Kotak is slightly positive. A few minutes back, I shared the Nifty Private Bank Index chart, and you can see the chart. The Nifty Private Bank is on the verge of the breakout of head and shoulder pattern. So look at the chart of Kotak Bank as well, forming a height of higher bottom in a daily frame. Even after the markets fall, the stock is still able to hold at the higher levels, and that's a good sign. तो कोटक में जो मोमेंटम होता है थोड़ा स्लो होता है, बट इट्स गुड के यहाँ पे ऊपर में होल्ड होता नजर आ रहा है। तो बायस इज स्लाइटली पॉजिटिव। Support is seen around 1950 level. ऊपर में stock can head towards 2050 level. Bajaj Finance 8,300 call bought at 216. 8,000. 8,300 call bought at 216. Okay. So the 2-3 stocks which are outperforming in such kind of market are the Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Bharti Airtel, राइट। ये 3-4 काउंटर से जो मार्केट के फॉल के बाद भी वो काफी आउटफॉर्म किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छा है बजाज फाइनेंस। दो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा साइडवेज हुआ है, इसलिए जो कॉल भी है उसमें डिके देखने मिला होगा आपको, बट सेटअप वाइज काफी अच्छा है। स्टॉक कैन हिट टुवर्ड्स 8,600 लेवल, सो यहाँ पे आप इसमें बने रह सकते हो। बट कीप आपने कॉल बाय किया है तो उसमें डिके भी होना चालू हो जाएगा। तो 8,200 इज सपोर्ट जोन फॉर द बजाज फाइनेंस। उसके नीचे आता है तो आप कॉल एग्जिट करना चाहिए। So, Madhu sir, do we have any delivery trade for today? हमने इंट्राडे ट्रेड तो दो ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट? तो डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? जैसे यूपीएल हम आपने डिस्कस किया था, राइट, टेक्निकल पिक है हमारा, तो यहाँ पे एक डिलीवरी ट्रेड बन सकता है यूपीएल में। काफी अच्छा सेटअप है एंड केमिकल एज अ सेक्टर सीइंग गुड पॉजिटिव मोमेंटम फ्रॉम लास्ट 3 to 4 वीक्स। तो यूपीएल में आप डिलीवरी बाय कर सकते हो, राइट।
तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है यूपीएल में, इसमें आप नजर रख सकते हो। मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 630 विल बी द स्टॉप लॉस। ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 680 तक का मोमेंटम इसमें आना चाहिए। सो गाइस, जैसे कि हमने आज दो इंट्राडे ट्रेड दिया, वन इज ऑन सोना बीएलडब्ल्यू, राइट, एंड another was on CDSL. So, Madhur sir, could you please update on the intraday trade that we had shared yesterday यस on यस। Sona तो Comps? सोनाकॉम हुआ इनिशिएटेड अराउंड 513-14 लेवल, 1 या 2 रुपए हमारे ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी भी। एंड सीडीएस 504 लेवल्स पे हमने इनिशिएट किया था मधुर कहाँ सर। पर किया था हमने? 504 लेवल्स पे, जस्ट चेक मी द प्राइस, 504 था क्या? राइट। ओके ओके, सो 504 अगर था तो सोना बीएलडब्ल्यू हमारे प्राइस से 10 रुपए ऊपर है। राइट नाउ ट्रेडिंग अराउंड 515 लेवल। And also there were two BTST that we recommended yesterday. One was on Angel One and BHEL. लेट मी चेक द बीएचईएल फर्स्ट। सो बीएचईएल अगर है तो शायद टारगेट हिट होगा रहेगा, बिकॉज स्टॉक इज अप बाय 2%, नियरली 2%, एंड ट्रेडिंग एट अ डे हाई। One can book the profit in the BHEL, and other one is Angel One. Let me check that one. Angel One is also up by nearly more than 1%. It made a high of 2369. So किसी ने buy किया रहेगा तो इसमें profit में रहेगा. So one can book the profit in BHEL, that is BHEL, and the Angel One as well. Talking about the CDSL जो हमने इंट्राडे इनिशिएट किया था, अभी भी हमारे प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम है आज। as I said, in capital market stocks 2-3 के आसपास हमने इनिशिएट किया था। सो यहाँ से 2-3 रुपए का मोमेंटम आया, बट आप इसे होल्ड कर सकते हो। हमारा टारगेट इसमें हिट हो सकता है आज। तो सोना बीएलडब्ल्यू में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। So, as we can see, we have covered almost all the stock queries for today. So this will be the last query. Like, what is your view on NCC? एनसीसी, सो ओवरऑल सेटअप वाइज अभी भी बहुत वीक है। काफी सारे पीएसयू में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। इट मेड अ हाई इन लास्ट जुलाई अराउंड 364, और वहां से ऑलमोस्ट 50% करेक्शन स्टॉक में हो चुका है। तो इट हैज इट्स नियरली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहां पे आसपास, सपोर्ट जोन के आसपास है। सो 178 180 द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। वहां पर आप इसमें बाइंग कर सकते हो, बट जैसे ही कोई बाउंस आता है स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट एज वेल, बिकॉज अब तक स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हुआ है। इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा जब ये 212 के ऊपर ना वीकली में क्लोजिंग देगा, तो वहां पर इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव के साइड चेंज होगा। बट टिल द टाइम सपोर्ट पे बाय करिए और बाउंस में एग्जिट करना चालू करिए। So, Madhur sir, we are nearly end of the session, and आज हमारा Nifty expiry भी है. So before we end the session, could if you want to add anything more, वहाँ श्योर पे श्योर, हमारे यूजर्स कुछ मॉनिटर कर पाए किसी स्ट्राइक को, या तो बुल कॉल स्प्रेड पे हमने जो स्टेट दिया right. है. So as I said, 22,800 is the Lakshman Rekha for the Nifty. Look at the 5-minute chart. Just few minutes back, Nifty again a mid low of around 22,812, and again the bounce of nearly 50-60 points from that level. So that's why I initiated with the bull call spread, because यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि निफ्टी 22,800 तोड़ना चाहिए। अगर इन केस 22,800 तोड़ता है तो चेंज द स्टैंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज वहां पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने मिल सकता है। So yes, I guess that's it, guys, from our end. Uh, and we hope that we will have a great profitable session today for Nifty expiry with Shivangi Sarda. So yes, that's it, guys, from my end. Thank you so much, Madhur sir, and also don't guys forget to join our stock the talk session with our expert Ruchit sir, and also our expiry session at 2:30 p.m. in the afternoon. And just one more announcement, guys, we will also have our commodity expiry today. So even don't miss that session, since we are making good sort of profit in the commodity markets as well. So yes, that's it, guys, from our end. Thank you so much for joining. Thank you so much, Madhu sir. Yeah, thank you.